Yes, dear Bloomy. The tongue twister. Tongue twister is written in a very rhetoric language, in a very figurative language. Okay, while reading it out to others, tongue is a twister. This is why it is known as tongue twister. The tongue twister. Here you may find she sells, she shells on the seashore. The shells she sells are sea shells. I'm sure. Okay, for if she sells sea shells on the sea shore, then I'm sure she sells sea shore shells. Here now it is in very poetic form, and it is composed, it is written in a very figurative language, rhetorical language. Sa and sha. Sa and sha. There is a difference between sa and sha. You may find, in this structure, in this expression, you may find. So try to differentiate sa and sha from each other. So while reading very fast, it becomes very difficult to pronounce, difficult to read out to others. This is why it is called tongue twister. Okay, let me translate it into Hindi. She sells, वह बेचती है सी शेल्स, समुद्री घोंघा, या ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे वह घोंघा या सीपी बेचती है. द शेल्स, जो वो घोंघा शेल्स है, शी सेल्स वह बेचती है, और हैं सी शेल्स, वो सी शेल्स हैं, यानी समुद्री घोंघे हैं वो. आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूं, निश्चित हूं. फॉर इफ, क्योंकि इफ शी सेल्स, अगर वह बेचती है सी शेल्स, समुद्री वो शेल्स, ऑन द सी शोर, समुद्री किनारे पर वो बेचती है, तो क्या होता है देन, तब आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूं, सुनिश्चित हूं. शी सेल्स, वह बेचती है, सी शोर, समुद्री घोंघा, शोर शेल्स, वो घोंघा समुद्री किनारे पर वो घोंघा बेचती है. द हियर डियर यू फाइंड, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. Okay dear, wish you all the best and brightest. Thanks a lot.